Hello students, this video is for grade LKG. So let us start. In this sheet, we are having three different parts in which we will get to know about three different subjects. The subjects are English, Maths and EVS. So let us start our sheet with the first subject, English. The question is, tell the position of Lacey in the picture given below. Okay, you can see four pictures are there. यहाँ पे four pictures दी हुई हैं, but all the four are different. ये सारी चारों पिक्चर क्या है, डिफरेंट है. इसमें एक कैट है और एक फायर ब्रिगेड है. ओके, एक फायर ब्रिगेड है और एक उसमें साथ एक कैट है. जो कैट है उसका नाम है लेसी. ओके, द नेम ऑफ द कैट इज लेसी. ओके, कैट का नेम यहाँ पर है लेसी. तो क्या है, हमें क्या बताना है, लेसी की पोजीशन बतानी है इन ईच पिक्चर. दैट द कैट मीन्स द लेसी इज इन फ्रंट, बिहाइंड, बिसाइड, अबव, इन. ओके, कैसे कहाँ पर है वो हमें उसकी पोजीशन बतानी है कि वो फायर ब्रिगेड के ऊपर है, नीचे है, साइड में है, अंदर है, बाहर है, कहाँ पर है, ये हमने उसकी पोजीशन बतानी है. अंडरस्टूड. तो बाहर के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, और सामने होगी अगर तो कहेंगे इन फ्रंट ऑफ. ओके, इन फ्रंट ऑफ मतलब सामने. अगर बगल में होगी बिसाइड, बैक साइड में होगी तो बिहाइंड, ऊपर होगी तो ऑन, अंदर होगी तो इन, नीचे होगी तो अंडर. Understood? In this way, we will define the position of the lacy. Okay? Now, let's start. The first picture is the lacy and the fire brigade. दो pictures हैं, lacy और fire brigade. lacy कहाँ पे है? lacy is in front of the fire brigade. fire brigade के just सामने है. So, lacy is in front of the fire brigade. What we will write? We will write in front of. I-N, in, F-R-O-N-T, front of. O-F, off, in front of. See the next picture. In this, the cat means the lacy is beside the फायर ब्रिगेड. फायर ब्रिगेड के साइड में है, और यू कैन से आफ्टर द फायर ब्रिगेड के बगल में है ना. आफ्टर बगल में मतलब बाद में है. यू कैन राइट बी साइड और आफ्टर, BESIDE, बी साइड और आफ्टर, AFTER, दोनों में से आप कोई एक लिख सकते हो. अंडरस्टूड. तो इसी तरीके से क्या करना है आपको, यू हैव टू राइट द पोजीशन. ओके, जो कैट है उसका नाम है लेसी. पोजीशन ऑफ लेसी हर पिक्चर में कि लेसी कहाँ पर है. अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू राइट द पोजीशन. अंडरस्टूड. या, नाउ let's move to our next section of this sheet, which is of maths. Join the dots and color the picture. In this, what you have to do is you have to join the dots. Okay, simply what you will do is 1 2 3 according to the counting. आप क्या करेंगे, काउंटिंग के अकॉर्डिंग आप इन डॉट्स को मैच करेंगे. ओके, लाइक 1 2 3 4 5 6, जहाँ जो काउंटिंग दी है काउंटिंग के अकॉर्डिंग आप इन डॉट्स को मैच करेंगे, और फिर जो भी पिक्चर बनेगा आप उसे कलर करेंगे. ओके, देन यू विल कलर दैट पिक्चर. सो लेट्स do the counting from 1 to 50. Speak with me. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 50. So we have read counting from 1 to 50. Now in this maths, what you will do is you have to join the dots and color the picture. ओके, नंबर वाइज आप डॉट्स को ज्वाइन करेंगे और जब आपका पिक्चर कंप्लीट हो जाएगा तो आप उसको काला करेंगे. नाउ लेट्स मूव टू आवर लास्ट सेक्शन ऑफ दिस शीट विच इज़ ऑफ EVS. राइट नेम ऑफ 5 लिविंग थिंग्स. ओके, 5 लिविंग थिंग्स के नेम आपको राइट करने हैं. what you have to do is you have to write name of 5 living things. Living things means the things which can breathe, which can eat and which can do work. Okay, ऐसी चीज़ें, ऐसे लोग जो कि सांस भी ले सकते हैं, खाना भी खा सकते हैं और वर्क भी कर सकते हैं. लाइक यू कैन से बर्ड्स, एनिमल्स, plants, human beings and insects. Okay, these are all the 5 living beings. Okay, plants, animals, birds, human beings and insects. Okay, so this was all about today's sheet. If you are having any kind of doubt related to any question, any topic, any subject, you can ask me. Thank you.